Chalo, so let's get started. I guess now everybody has joined the session. Almost 4 students have joined the class. Let's get started. So far now we were studying about the Indian National Congress, because from the Indian National Congress only we'll get our, you can say, Indian National Freedom Movement. We'll start our Indian National Freedom Movement from INC, from the formation of INC. So that is why it's really important to study in detail about INC, because it is really very relevant for your preliminary examination. Not very relevant for mains, but for prelims it's very relevant. Okay, so prelims ke perspective se there are few points that you need to note down and you need to retain in your mind also. Indian National Congress was the first political party of India that we have discussed. It was formed by the help of A.O. Hume. I told you in the last lecture that he was a retired civil servant. 1885 में Indian National Congress बनकर आता है. It's basically, you can say, all the politically minded people, all the politically aware people, they came together and formed INC. Before Indian National Congress, there were different organizations, Zamindari Association, right? तो अलग अलग organization हुआ करते थे INC से पहले भी. So when Indian National Congress came into existence, all these little organizations, they came together in the INC only. They got merged together in the INC, because all these different organizations which were formed, they were fighting for their again own individual, you can say, benefit, okay, or problems. Abhi bhi before INC unity nahi thi. People were fighting, they were creating organization, but for their own individual benefit, for their own community based benefit. That is why there had to be one party, one platform where everyone would accumulate together and fight for India, not for their own welfare. Okay, that was the purpose of creating INC, to fight for the nation. That is why the name is Indian National Congress. Congress means when people come together. Okay, Congress का मतलब क्या होता है? When you are coming together, when you are a collection, when you are one community, that is Congress. Indian National Congress, India's national community, India's national, you can say, cluster, that is INC. जब सब लोग एक हो गए और एक बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं, all of them are together, coming together for one individual motive, that is freedom, that is our political rights, that is our respect. Because this is our nation. You are the outsider. The Britishers are the outsider. They have come here and they are ruling us on our own land. That is why there was a need to create an organization. The way I am speaking, the way I am telling you things, please try to retain it in your mind. Because if in interview they ask you any question, they can ask you anything. Don't think only they will be limited to your optional or your DAF. No, your DAF, that is the things that you will write about yourself, you will write from your perspective. They will have a look at your DAF, right? They will go through your name, your school, your hobbies and everything. But they will try to delve deeper into your personality. And that cannot happen only through the DAF. They can ask you any question from any topic that you have studied in your entire UPSC ka preparation. They will not be limited to one subject or your optional subject. Okay? Because they want to know how you think, how you perceive your own nation, for which you are going to work hard in the future. They want to see an officer in you, right? So isliye whenever you are studying anything, don't think this is not my optional subject, so I am not going to delve deeper into this subject, or I am not going to analytically study the subject. I'll just cram it and give the paper. No. Every stage in the paper is your interview only. Prelims is your interview, mains is also your interview. And interview तो होता ही interview है. ठीक है, हर स्टेज में आपको टेस्ट किया जा रहा है, चाहे वो लिखकर हो, चाहे वो टिक मार्क करके हो, चाहे वो बोलकर हो. ठीक है, तो ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है. दिस इज नॉट अ स्कूल लेवल एग्जाम, नॉट अ कॉलेज लेवल एग्जाम, नॉट अ जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटी की भैया एक जॉब चाहिए इसलिए इंटरव्यू की जरूरत है, दे दो. स्क्रीनिंग होगी तो लिखकर एग्जाम देना है, दे दो. नहीं, ये नॉर्मल जॉब नहीं है. It is said it's a 9 to 5 job, but that is only on paper. Actually, it's a 24/7 job that you are going to enter into. ये कोई 9 से 5 या 6 बजे की जॉब नहीं है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो. ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. यू हैव टू बी ऑन योर फीट, ऑन योर टोज 24/7. Okay, and right now you are sacrificing parties, friends, high salary, this and that. Even after clearing this exam, you will have to sacrifice your family time,
high salary, etc., etc., because you have to work for the people on the field. But what you will get in return, you will get respect. And that is not available anywhere else. That kind of respect that, an officer holds, वो हर जगह नहीं available होता. ठीक है? Satisfaction. When you will go to bed, you will be satisfied that you were to, you at least could help one person. राइट वैसे तो आप हजारों की हेल्प करोगे, बट एक सेटिस्फैक्शन होगी मैंने किसी एक का तो सॉल्व किया प्रॉब्लम. ठीक है? तो दीज टू थिंग्स आर दी थिंग्स फॉर विच अ ह्यूमन इज स्ट्राइविंग हार्ड ऑल इज लाइफ. यही दो चीज के लिए इंसान भागता है, इज्जत मिल जाए और संतुष्टि मिल जाए कि मैंने कुछ किया. ठीक है? पॉइंट क्लियर? These are the two things, goals of a human. And then salary वैलरी तो आती रहती है, आपको पता ही है, हर महीने एक satisfaction है, salary तो आएगी, plus all your other expenses are being taken care of. But the satisfaction and respect that you will get, you cannot match it with any other thing. ठीक है? So when we talk about Indian National Congress, I have told you the meaning of Indian National Congress also. ठीक है? Now, the very first session of INC was conducted in, because it was formed in 1885. So first session would be conducted in 1885. There was a question in prelims once. Most of the students marked it wrongly, right? It was about the first session of INC. Year was given, one of the option was 1886. Students thought, it was established in 1885. So obviously the next year, the session would be conducted. That is wrong. जिस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था उसी ईयर में पहला सेशन हो गया था. द ईयर इन विच द फर्स्ट सेशन वाज कंडक्टेड, इन द सेम ईयर, sorry, the INC was formed, in the same year the session was also conducted. So do not commit these kind of silly mistakes. Okay? Now the first meeting was not a very grand success, but yes, it was a success in itself, because 72 delegates, 72 representatives of different provinces attended this meeting. And it was, initially I told you in the last class, we studied the moderate phase, right? There were two kinds of phases in INC, moderate and extremist. The moderate phase was the beginning phase of INC. So basically, in the moderate phase, all the important leaders that we discussed, they were very educated. Dadabhai Naoroji, the grand old man of India, right? Vomesh Chandra Banerjee. So these were educated people, but they were also a little aged. They were also middle class people, that means well-to-do people, right? Money wise, financially, they were well-to-do people. And their approach towards fighting for their country was thoda sa moderate, mild approach tha. ठीक है? कि we will write petitions, we will very peacefully protest, right? And we will participate in debates and discussions to make sure कि Britishers can hear our emotions. But obviously, Britishers are Britishers. जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, राइट? उस टाइम पर यही कहावत सही बैठ रही थी. The more you are being peaceful, the more the Britishers were thinking कि these Indians are so mild, we can easily keep them suppressed. इतने भोले भाले हैं, इनको तो आराम से दबाकर रख सकते हैं. So Britishers were also, what were they were doing? They were trying to, throw treats our way. They were trying to bring the educated Indians abroad, right? They were trying to induct them in their own council. They were trying to give them good positions in government, in the governance activities. तो दे वर ट्राइंग टू बेसिकली छोटे छोटे ट्रीट्स फेंक रहे थे. आओ हमारी गवर्नमेंट में, आपके लिए एक पोजीशन है, वहां बैठ जाओ, आओ विदेश लेकर चलते हैं, चलो आपको और गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं. ठीक है? एंड वी आर ट्राइंग टू शो यू दैट वी रिस्पेक्ट इंडियंस ऑल्सो. वी आर प्रोवाइडिंग देम ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज. वी आर हेल्पिंग देम स्टैब्लिश INC. थ्रू INC यू कैन चैनलाइज योर वॉइस. आपको जो भी प्रॉब्लम है INC के थ्रू हमें बताओ. And moderate leaders, what they were doing? They were writing petitions through INC, sending these petitions to British Parliament. And were these petitions being heard? No. एक साल हो जाता था, कोई जवाब नहीं आ रहा उस petition पे, right? So this was what was happening in the moderate phase. The founding members of INC were Dadabhai Naoroji, Dinshaw Wacha. These two were the pillars, the oldies. Okay, and Alan Octavian Hume was also one of the founders of INC, because on his insistence only the Britishers allowed Indians to form INC. उन्हीं के इंसिस्टेंस पे ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया था इंडिया को कि जाओ INC बना लो. ठीक है? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया है तो मुझे प्लीज चैट सेक्शन में बता दो, मैम ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टिल दिस एस्पेक्ट, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. आई होप यू हैव क्रिएटेड दैट फ्लो चार्ट, और एटलीस्ट यू हैव क्लिक्ड अ पिक्चर ऑफ दिस फ्लो चार्ट. दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है? ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को?
सबको क्लियर हुआ है तो सिर्फ ऋषभ और वत्सल्य ने यस क्यों लिखा है? इफ एवरीबडी is comfortable till this point, then why only Rishabh and Vatsalya are writing yes, not others? We have Sai, Raju, Amritansh in the class also. Raju is also saying yes. Okay, very good. Amritansh, Sai, everything is clear. सबको सब कुछ क्लियर हो गया है, तभी हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, अगर आप लोगों को भी क्लियर हो गया है तो प्लीज लेट मी नो. जल्दी से फटाफट. जस्ट हैव टू राइट वाई. एक वाई लेटर टाइप करना है बस. ठीक है. Also, Vatsalya, in the meantime, please click a picture of the flowchart that you have made so far and post it on the group so that other students would know कि class has started. Okay, चलो. We'll wait for few more minutes. Vatsalya will post the picture and then we'll start. तब तक आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो जो अभी तक हमने पढ़ा है. ठीक है. All right. चलो, let's get started then. शुरू करते हैं. ठीक है. Now, these are some important pointers which I have taken from prelims PYQs. ठीक है, ये मैंने कुछ pointers लिए हैं prelims के PYQs से, तो इसको आपको note down कर लेना है. ठीक है. For example, A.O. Hume. Hume means A.O. Hume, the British civil servant who helped Indians to create this INC. He was the first who organized the first meeting in Bombay, and that could happen only with the approval of that viceroy of that particular time, Lord Dufferin. उस टाइम के जो वाइसरॉय थे उनके अप्रूवल पर A.O. ह्यूम ने पहली मीटिंग बॉम्बे में 1885 में कंडक्ट की थी. एंड उमेश चंद्र बैनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस. ठीक है, 1885 for the first time INC is coming into forefront, and the first president was Umesh Chandra Banerjee, and 72 delegates attended the meeting. That means 72 delegates means one person from each province. And in 1890, after 5 years, Kadambini Ganguly was the first woman graduate of Calcutta University who gave a speech, opening speech of Congress session. When the session was conducted, the opening speech was given by Kadambini Ganguly. So it also shows that INC was all inclusive. Men, women could participate, and it was basically a platform where women were also given the voice, the representation. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें ये दिखाया गया ये इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है, इसमें आदमी क्या और औरत क्या सब आके पार्टिसिपेट करो. ठीक है, irrespective of your gender, caste, religion, you have to come here and participate in the freedom movement. ठीक है, because it is for India that we are fighting. No gender barriers. That was shown in 1890 when Kadambini Ganguly, became the first woman who gave the opening speech. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए सभी को? प्लीज लेट मी नो इफ यू हैव नोटेड दिस डाउन. मुझे एक बार बता दीजिए अगर आपने ये सब नोट डाउन कर लिया है ताकि हम आगे बढ़ सके. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे बढ़ते हैं. When we talk about Kadambini Ganguly over here, जब हम कादम्बिनी गांगुली के बारे में पढ़ते हैं, she is a very important personality. तो प्लीज राइट डाउन हर नेम. ऐसे इस तरीके से ना हम फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑल्सो, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 1 हिस्ट्री का पोर्शन ऑल्सो एंड सोसाइटी का पोर्शन ऑल्सो. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ दिस. ठीक है, so let us make a flow chart on Kadambini Ganguly now because her role is very important. इनका रोल काफी इंपॉर्टेंट है. So here we are going to start with Kadambini Ganguly. When we talk about Kadambini Ganguly, we know that she was, write it down, the first woman in the British Empire during the British period, or you can say in the British period or British Empire to receive a BA. BA की जो डिग्री होती है ना, BA डिग्री, she was the first woman in British period to receive the BA degree. So here you can see that this symbolizes the mark of awareness among the females also. ये symbolize करता है. So if the question is asked ki, since in the British period, what examples you can quote which symbolizes the awareness of women, right, when it comes to education.
सो यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ कादम्बिनी गांगुली ऑल्सो। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ब्रिटिश पीरियड में आप विमेन अवेयरनेस, विमेन एजुकेशन अपॉर्चुनिटी का फर्स्ट एग्जाम्पल आप प्रेजेंट कर सकते हो तो वो क्या होगा, तो दैट कुड बी कादम्बिनी गांगुली ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर बीए की डिग्री इन्होंने रिसीव की थी, और बीए की डिग्री रिसीव करनी इतनी इजी नहीं थी एट दैट टाइम। टू इवन रिसीव दिस डिग्री वाज नॉट इजी। ओके, शी ऑल्सो, राइट इट डाउन, she also became the first woman graduate, the first woman graduate of Calcutta University. Now when I was doing my CA, ठीक है, in my CA journey there was a girl that I met. अपने CA की जर्नी में एक लड़की थी, काफी अच्छी लड़की थी, मुझसे 1-2 साल छोटी ही थी, right? She was 1 or 2 years younger than me. And I was doing my first exam I was given, not the first exam, after the foundation, the entrance, I cleared my entrance, and then the first exam, that is the intermediate level exam I was giving, and for that I was attending a coaching, cost FM का एक पेपर होता था जिसकी मैं कोचिंग ले रही होती थी, ठीक है, there was a paper of cost FM, costing, I was taking the coaching for that paper. So I met this girl 1 or 2 years younger than me, and she used to tell me she has 2 brothers and they are elder brothers, and she was the last child and female, she was a female. So she used to tell me ki from the coaching, when I go back to my home now, my I have cleared my entrance and I'm preparing for this exam just because my brothers are supporting me, because my parents, they do not want me to pursue further education. They are telling me कि भैया you have completed your 12th, now we are going to look for a suitable match for you, ठीक है. But her brothers, they were educated, they were also a CA or CS, so they were supporting her sister, their sister, to pursue CA and to qualify this exam. So they were fighting with their parents to make her study for this exam. अपने parents के against जाके वो बहन को पढ़ा रहे थे. They were bearing all her expenses also, education expenses. But her mother used to treat her very badly. For example, when she used to tell me, when I go back home, मेरा मन नहीं करता, I don't feel like going back to home. I feel like studying here, sitting here in this coaching and studying day and night and sleeping here, because after the classes, when I go back home, my mother, she's just sitting there waiting for me कि कब बेटी आएगी, and then she waits for me to finally cook dinner for everyone. ठीक है, चॉप करके भी नहीं रखती हैं वेजिटेबल्स, बैठकर वेट करती हैं, टीवी देखती हैं कि अभी लड़की आएगी कोचिंग लेकर. देन शी नेवर लेट्स मी स्टडी. शी टेक्स माय बुक्स एंड शी जस्ट सेंड्स मी टू द किचन कि जाओ खाना बनाओ, बिकॉज भाई लोग तो जॉब पे जाते हैं, लेट आते हैं रात को, तो पीछे से मॉम और डैड कुछ भी करते रहते हैं. एंड शी वाज देयर रियल बायोलॉजिकल डॉटर, एंड स्टिल दे वर ट्रीटिंग हर लाइक दिस. दे डिड नॉट वांट कि हमारी बेटी CA बने जाकर. एंड शी वाज ब्रिलियंट इन स्टडीज, ब्रिलियंट, 95 प्लस की लड़की थी वो. तो उसके पेरेंट्स, एंड दिस इज अबाउट 2017, ये 2017 की बात है, ठीक है. तो आई कैन टेल यू, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो, इट्स टफ फॉर मेनी गर्ल्स टू इवन परस्यू द चॉइस ऑफ करियर ऑफ देयर ओन लाइकिंग. अपने खुद के वांट का, अपने खुद की लाइकनेस का एक करियर परस्यू करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है. आई हैव सीन गर्ल्स, नॉट दिस इज अ स्टोरी ऑफ जस्ट वन गर्ल, देयर आर अदर गर्ल्स. व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, their parents used to treat them like this ki bhaiya, it's not necessary to complete your education, you have to we have to find a suitable match for you. So in today's world, when there is so much talks going on about women empowerment, and there are so many women who are sitting at top positions, IAS, IFS, president of India, right, governors, तो ये इतनी पोजीशन से जो औरतों ने ली हुई हैं, स्टिल द पेरेंट्स आर रीडिंग अबाउट देम, लुकिंग एट देम इन द टेलीविजन एंड एवरीथिंग, and still they are treating their own daughters like this. So at that time in the British period, to think about educating a girl child, that was that used to take a huge toll, socially also, emotionally also. And us time par Kadambini Ganguly became the first woman graduate of Calcutta University. It's not a small thing. We can today study and write in the notes and solve it in the exam. It's like very natural and normal thing. But for Kadambini Ganguly, it was not normal. It was a big deal. जैसे आज के टाइम पे एक लड़की एक IAS का एग्जाम क्लियर कर लेती है ना, या CA का एग्जाम क्लियर कर लेती है, या एक बहुत अच्छी जॉब बैक कर लेती है, तो एक अचीवमेंट होती है, राइट. उस टाइम पर एक BA की डिग्री अचीव करना भी, पहली वुमेन ग्रेजुएट बनना एक बड़ी अचीवमेंट थी, ठीक है. एंड देन टू प्रेजेंट द ओपनिंग स्पीच ऑफ कांग्रेस सेशन वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट. ओके, so we all should feel proud कि उस टाइम पर her parents supported her and she became the first woman graduate. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को.
Now, did you understand the meaning behind this statement of being a first woman graduate or not? And ये ना मोस्टली जिसके ऊपर बीतती है वही समझ पाता है. हम तो सुनकर पढ़ के एक अच्छी फीलिंग ला सकते हैं, बट उससे भी ज्यादा अच्छी फीलिंग उस औरत के लिए होती है जो इस अचीवमेंट को ले पाती है. And another achievement that she bagged was she was the first doctor of Bengal. So another big achievement उस time पर first doctor of Bengal. So she was basically the first woman graduate of Calcutta University, the first woman who addressed the Congress session, the first doctor of Bengal, and the first woman to receive a BA degree. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया तो जल्दी से बता दो. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया तो फटाफट से मुझे चैट सेक्शन में बता दो. शी वॉज इंडियाज फर्स्ट फीमेल डॉक्टर्स. ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हो. यू कैन राइट शी वॉज इंडियाज फर्स्ट female doctor. Another important point, she pioneered, write it down. That she also pioneered a successful medical practice in India for women, along with other such female doctors as Anandibai Joshi. Along with Anandibai Joshi, she also carried out successful women medical practice in India. So this is again a very good step. ठीक है, very exceptional step taken by Kadambini Ganguly. ठीक है, गूगल ने भी अभी इनको सपोर्ट किया था by creating a doodle in 2019. तो इसीलिए this woman is very important when it comes to your प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. जब प्रिलिम्स के एग्जाम की बात आती है तो कादम्बिनी गांगुली जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है. आई होप यू हैव मेड दिस फ्लो चार्ट. उम्मीद करती हूँ आपने ये फ्लो चार्ट बना लिया होगा. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज वोमेश चंद्र बैनर्जी. यहाँ पर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी पढ़ने वाले हैं. प्लीज राइट इट डाउन. इट इज वोमेश चंद्र बैनर्जी और बनर्जी. ठीक है, बंगाल में बनर्जी बोलते हैं बैनर्जी को. ठीक है, सो लेट अस स्टडी अबाउट वोमेश चंद्र बनर्जी आल्सो. WC Banerjee, who was the first Indian to act as a standing counsel, right, in the Indian National Congress. तो जब हम इनकी बात करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू रिमेंबर व्हेन डिड हु वाज दिस पर्सन, एंड ही वाज आल्सो नोन एज उमेश चंद्र बैनर्जी. वोमेश चंद्र बैनर्जी और उमेश चंद्र बैनर्जी. ओके, सो यू कैन राइट दैट ही वाज एन इंटेलेक्चुअल. ये कौन थे? एक इंटेलेक्चुअल थे. एंड ही वाज अ प्रोमिनेंट, राइट इट डाउन, ही वाज अ प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियन. एक बहुत ही फेमस इंडियन पॉलिटिशियन थे. एंड ही वाज द first president of Indian National Congress. Now it is said that he was born on 29th December 1844 and the name suggests, हमें पता है कि हमारे वोमेश बाबू कैलकाटा से थे. He was from Calcutta. ठीक है, so he was born in Calcutta. Now, when we talk about his this personality, we need to understand his achievements, because achievements वाला part जो है वो prelims के लिए बहुत important है. Now, before we study the achievements, here's a small anecdote for all of you. Whenever we study history, we always go back to the achievements, right? हम जब भी history पढ़ते हैं, achievements में जाते हैं ना, हमको लगता है wow, this personality is such a good personality, big personality with so many achievements. But we do not look at their failures, because before the achievements comes the failures. Even if we talk about an IAS officer, IPS or IFS, or even Prime Minister. Prime Minister को भी हम देखते हैं कि he is our Prime Minister, but we forget about all those years when he was not a Prime Minister, but was working hard, struggling hard, toiling day and night to get where he is right now. ठीक है, अब देखो बचपन से ही कोई ये सोच के पैदा नहीं होता मैं तो एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा, राइट? बचपन से ही कोई ये सोच के पैदा नहीं होता. when you are born, when you are in school, you are 10 or 11 years old, you don't know who an IAS officer even is. तुम्हारे सामने से गाड़ी भी जा रही होती होगी, तुम अपने टॉफी और आइसक्रीम खाने में बिजी रहते होगे, राइट?
So we become aware of this position or that position when we are you can say carved up by the society. जब हमें society अलग तरीके से बातें चार बातें सुना सुना के टोन अप करती है कि ये होता है, ये एक अचीवमेंट का झंडा है, ये टारगेट है, पूरा कर लो तो अच्छे बन जाओगे, राइट? वो सब देख देख के हम समझते हैं ये पोजीशन है, वो पोजीशन है, बट एक्चुअली में देयर इज नो पोजीशन, राइट? व्हेन यू गो बैक टू योर स्कूल टाइम और योर टाइम व्हेन यू वर जस्ट अ टीन, तब उस टाइम पर कोई अवेयरनेस नहीं थी. बट when you consistently toil hard without keeping in mind the results, but thinking कि we have to do something good for the society and for our own self satisfaction, then your failures, your consistency, your hustle, your hard work, your smart work, your tension, your depression, everything, it converts into achievements. ठीक है? जब आप कंसिस्टेंटली लगे रहते हो, वो एक एक दिन बनकर एक दिन अचीवमेंट बनता है. ठीक है? So when we are studying about the achievements of these personalities, remember it was the British period. These people were working very hard, hustling day and night. Even some of them were getting beaten up by the Britishers. इनमें से कुछ को तो ब्रिटिशर से डंडे भी पड़े हैं, तो उस टाइम पर रिस्पेक्ट भी खोई है इन्होंने, राइट? इज्जत भी गई है, ईगो भी टूटा है, एंड फाइनली ऑल दैट पेन it summed up into these achievements that we are studying. Okay, chalo, let's start. So when we talk about the achievements, the first achievement is that he was the first Indian to act as a standing council in Calcutta High Court. ठीक है? तो कैलकाटा हाई कोर्ट में ये स्टैंडिंग काउंसिल की पोजीशन थी, एक लॉयर थे ये. ठीक है? अनदर इंपॉर्टेंट अचीवमेंट, एक और इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है 1865. he became the first general secretary of the London Society, which was founded by the grand old man of India, who was दादा भाई नाउरोजी. तो लंदन सोसाइटी जो थी वो किसने एस्टैब्लिश की थी? दादा भाई नाउरोजी ने. रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स, प्लीज अंडरलाइन दिस लाइक दिस. इस तरीके से अंडरलाइन कर लो और किसी और कलर के पेन से अंडरलाइन कर लो और इस तरीके से स्टार बना लो, सो दैट व्हेन यू विल रिवाइज दिस फ्लो चार्ट यू विल नो व्हाट एल्स टू रिवाइज साइमल्टेनियसली. सो 1865, Vomesh Chandra Banerjee becomes first general secretary of London Society. This society was founded by Dadabhai Naoroji. Another important preliminary point. Now another important achievement, एक और achievement पढ़ लेते हैं यहाँ पर. Now at the age of 41, ठीक है, he presided over the first session of INC. So he was a moderate leader, and I told you people above 41 they were all moderate leaders. जितने भी 41 के ऊपर के लीडर्स थे ना, वो सारे moderate leaders थे. ठीक है? तो इन्होंने भी 41 की एज में, दिस इज द एज, 41 की एज में इन्होंने पहला सेशन जो INC का था वो स्टैब्लिश किया था. ठीक है? यहां तक पॉइंट सबको क्लियर हो गया है? तो मुझे चैट सेक्शन में एक बार बता दो. इफ द पॉइंट्स आर क्लियर लेट मी नो इन द चैट सेक्शन ऑल्सो. Okay, now another important achievement, he opposed the salt tax. He opposed the salt tax even before Mahatma Gandhi did. महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स के अगेंस्ट विद्रोह किया था ना, उनसे पहले वोमेश चंद्र बनर्जी raised his voice against the salt tax. He wanted, write down, यहाँ पर लिखो, that he wanted industrialization in India. He wanted industrialization in India and supported the Swadeshi movement. ठीक है? बाद में होता क्या है, because of in his old age, because of his health reasons, he moved to England and he settled in London, and he died on 21st July 1906 इन लंदन ओनली. लंदन में ही इनकी मृत्यु हो जाती है. तो जितने भी मॉडरेट लीडर्स थे वो चाहते तो बहुत कुछ थे, किया भी बहुत कुछ अपनी तरफ से, बट थोड़े मॉडरेट थे अपने अप्रोच में. और उस वक्त पे ना, एट दैट टाइम द डिमांड ऑफ दैट टाइम वाज नॉट टू बी जस्ट माइल्ड इन द अप्रोच.
The demand was to give the same kind of reply and reaction which the Britishers were giving. जैसा है इंसान उसको वैसा ट्रीट करना वाला सिचुएशन था उस टाइम पर. इफ समवन इज स्लैपिंग यू हार्ड एंड हार्ड एंड हार्ड, you cannot just sit, smile and request him, please don't slap me, please don't slap me. ऐसे नहीं कर सकते, वो तो और हंस के थप्पड़ ही थप्पड़ मारेगा, right? You have to hit him hard just to make him stop slapping you. ठीक है, आपको रोकना है उसको कि तुम्हें थप्पड़ ना मारे, तो या तो उसका हाथ टाइटली पकड़ लो, either hold that person's hand tightly, right? और एक मुक्का मारो अच्छा सा कि फिर वो थप्पड़ मारना भूल जाए. ठीक है, तो ये वाली उस वक्त टाइम चल रहा था. That was required, needed at that time. Okay, यहाँ तक सबको क्लियर हो गए हैं पॉइंट्स? तो प्लीज मुझे बता दीजिए so that we can move forward. All right, Rishabh, please, if you have written down and made this flow chart, click a picture and post it on the Telegram group, and then we'll move forward. Okay, do that and then we'll move forward. हो गया सब. Now the next very important personality for prelims that we are studying, and he is very important for prelims. ये prelims के लिए ना काफी important है. So make sure that you make a good, flow chart in this class and of this particular personality. Dada Bhai Nauroji बहुत important है because he created many organizations, he created many societies, and these societies were really fruitful. ठीक है, काफी fruitful थी ये societies हमारे Indian national movement के लिए. ठीक है, so let's start the flow chart. Everyone is interested in Dadabhai Nauroji. You know why I am saying that everyone should be interested in this personality? Because we both share the same birthday. ठीक है, Dadabhai Nauroji and me, we both share the same birthday. And most of my students who were there with me on Unacademy when we used to study history, I used to share the same thing with them ki Dadabhai Nauroji and we, and me, we both share the same birthday. So they used to wish me, and still today they wish me through mails every time on my birthday by calling me the grand old, daughter of India. तो वो ऐसे मजाक बनाकर इस तरीके से मुझे विश करते हैं हर साल. So I love this man. Why? Because we have the same birthday. That is one of the things. 4th September, ठीक है, is his birthday and also mine. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं दादाबाई नावरोजी की, 4th September की बात करते हैं, इट्स द बर्थडे ऑफ दादाबाई नावरोजी. यू हैव टू रिमेंबर हिज निकनेम. इट इज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया. ठीक है, ये इनका है निकनेम because he was among the first leaders who stirred the national consciousness in the country. That also you can write down over here. Please write down. He was among the first leaders. He was among the first leaders तो यहाँ तक पॉइंट सबको आई गेस क्लियर हो गए हैं. पहले लीडर थे जिन्होंने नेशनल कॉन्शियसनेस कंट्री में स्प्रेड की थी. एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट he served as the first Indian member of British Parliament. So here we can see how the Britishers were luring Indians and trying to convert them into a milder personality by luring them into their own parliament, in their own administration and governance. तो यहाँ पर क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स कि भाई इंडियंस को, जितने एजुकेटेड इंडियंस हैं उनको अपने गवर्नेंस में जगह देकर they were trying to you can say brush their ego. ठीक है, they were trying to butter them up. And write it down, another important point, his first agitation or fight against the Britishers, his first agitation, that is in 1859. It concerned the recruitment of Indian civil service. So basically he wanted more Indians
to be a part of Indian civil service. That was his first agitation against the Britishers. पहली इनकी जो फाइट थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो इसी की थी कि भाई आपको इंडियन सिविल सर्विस में इंडियंस को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देना, यू नीड टू गिव मोर रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस इन द इंडियन सिविल सर्विस बिकॉज यू आर हायरिंग people to administer India, so their Indian representation should increase. ओके तो यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, सो क्रिएट अ स्टार ओवर हियर. यहाँ पर एक स्टार आप बना सकते हो, अनदर इंपॉर्टेंट स्टार. ठीक है. नाउ कम्स द नेक्स्ट पीरियड दैट इज 1865 and 1866. These 2 years are very important because here he helped found the London Indian Society, or London Society you can say, and the East India Association. So in 1865 he established London India Society. 1866 he established East India Association. Now why these associations or these societies were created? क्यों establish किया गया इसको? What was the reason? Why? Question is why? So the reason is very simple. Basically write down the two organizations. यहाँ पर आप लिखना शुरू कर दीजिए. The two organizations sought to bring nationalist Indians and sympathetic Britishers on one platform. So here you can see, यहाँ पर आप देख सकते हो कि what was the purpose of creating these two particulars organization. The purpose was simple. It was to join both the Britishers and Indians against the British government. Those Britishers who were sympathetic towards Indians and the Indian national leaders, he wanted to bring them both to stand against the British government. The Queen, महारानी के अगेंस्ट खड़ा करना चाहते थे उन ब्रिटिशर्स को हमारे दादा भाई नौरोजी, जो कि जानते थे कि उनकी गवर्नमेंट गलत कर रही है इंडियंस के साथ. Right? He wanted those Britishers also who were sympathetic. For example, he had good friendship with A.O. Hume, and A.O. Hume was a retired civil servant. He was not in the government anymore. So A.O. Hume knew that British government is not having good intentions for Indians. That is why he wanted such kind of Britishers to be a part of these associations that he was creating. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ओके. नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर. इन 1885 he became vice president. He became the vice president of Bombay Presidency Association. Bombay Presidency Association. And he was nominated to the Bombay, write it down. He was nominated to the Bombay Legislative Council. By who? By Governor Lord Rhea. ठीक है? And he helped form the Indian National Congress also. INC was also established. तो यहाँ पर 3 चीजें होती है 1885 में. 3 things happen. He first becomes, write down, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लो इस चीज को या बॉक्स बना लो. He first becomes the vice president of Bombay Presidency Association, BPA, and then he was again nominated. यहाँ पर he was again nominated to Bombay Legislative Council. That means he is being inducted in the government also, and INC also established with the help of A.O. Hume. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया. एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज, यहाँ पर एक और प्रीलिम्स के लिए आई हैव टेकन दीज पॉइंट्स फ्रॉम प्रीवाइज क्यूज. ठीक है, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. ही वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट थ्राइस, 3 बार बने थे ये. इन विच ईयर्स? 1886, 1893, 1906. Now tell me in 1885 who was the president of Congress? 1885 में चैट सेक्शन में फटाफट से बताओ. 1885 who was the president of Congress? चैट सेक्शन फटाफट.
जल्दी से बताओ फटाफट। Yes, it was Vomesh Chandra Banerjee. Very good. Vomesh Chandra Banerjee was the first president. Let me know if you have drawn this flow chart. जल्दी से मुझे बताओ। Now I told you that INC में दो phases थे, extremist and moderates. I told you that we are going to create a table of differentiation. ठीक है, write it down. यहाँ पर लिख लो table of differentiation. This is going to help you for faster revision. ठीक है, ये हो गया आपका table of differentiation which we are going to draw over here between extremist and moderates. ये extremist और moderates की बीच की table होगी. ठीक है, यहाँ पर write down the heading. यहाँ पर heading लिखना है आपको basis. The heading would be basis. ठीक है, the next heading would be over here. The heading would be moderates. ठीक है, another heading we are going to draw, that is over here extremist. ठीक है, ये हमारी तीन headings हो गई, basis, moderates and extremist. I'll create a box over here. Just give me a second. इस तरीके से we have created a box. ठीक है, अब इससे we are going to differentiate. I hope you all are making this kind of table. इस तरीके की टेबल बनानी है ताकि आपका डिफरेंशिएशन इजीली आप रिवाइज कर सको. आई होप यहाँ तक सबने ड्रॉ कर लिया है. ठीक है, आई होप, उम्मीद कर रही हूँ सबने ड्रॉ कर लिया है यहाँ तक. चलो लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट बेसिस वुड बी, बट उससे पहले हियर वी विल राइट, यहाँ पर हम लिखेंगे phase because we are going to understand the phase also. यहाँ पर phase होगा आपका पहला 1885. moderates were from 1885 to 1905 and extremists were from 1905 to 1920. ठीक है, ये आपका phases थे इनके, ये आपको पॉइंट याद रखना है. phase 1885 to 1905, 1905 to 1920. ऑल राइट, आई होप ये विजुअली बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिख रहा होगा. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द फर्स्ट डिफरेंशिएशन, यहाँ पर जब हम पहला डिफरेंशिएशन इसका पढ़ेंगे, ठीक है, द फर्स्ट डिफरेंशिएशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एम. ठीक है, सबसे पहले हम एम पढ़ने वाले हैं. इन मॉडरेट्स 1885 to 1905 they aimed at, write it down, they aimed at administrative, they aimed at administrative and constitutional reforms. ठीक है, so there were two kinds of aims. First was administrative aim or reform and second was constitutional reform. They wanted these two types of things to happen in India. Second aim इनका क्या था? They wanted more Indians in the administration and not to an end of British rule. So they did not want to end the British rule. They just wanted more representation of Indians in the administration. ये British rule को खत्म नहीं करवाना चाहते थे. Their aim was not to end the British rule. Their aim was to just, add more Indians in the administration, more representation of Indians in the British administration. Okay, that was their aim. That is why they are known as moderates. And what was the aim of the extremist? Extremist का क्या aim था? So the aim of the extremist was, aim यहाँ पर आप लिख सकते हो, their aim was getting Swaraj. They wanted Britishers to go, right? Getting Swaraj. Swa means self. Raj means rule, self-rule. Swa means, this is a Sanskrit word, Swa. Swa means self. Raj means, राज का मतलब क्या था? रूल, स्वराज. ठीक है, तो इनको स्वराज चाहिए था, अपना सेल्फ रूल चाहिए था. वी आर इंडियंस, दिस इज आवर नेशन, दिस इज इंडिया, दिस इज नॉट ब्रिटेन, सो वी वांट टू रूल आवर ओन नेशन. व्हाई आर यू स्टेइंग हियर, राइट? यू गो एंड रूल योर ओन कंट्री. ठीक है, दैट वाज द एम ऑफ एक्सट्रीमिस्ट. सेकंड एम वाज दे वांटेड टू एंड द टायरनी रूल ऑफ ब्रिटिश. ये चाहते थे
ये ब्रिटिशर्स का रूल जो है बस बहुत हो गया, खत्म हो और ये यहाँ से दफा हुए, ठीक है। दिस वाज द मोटिव। पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ तक? सो दिस इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन यू कैन से। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू इरेज द सेकंड पॉइंट, ठीक है। यू कैन से ओवर हियर, यहाँ पर आप लिख सकते हो एम। द फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन वाज देयर एम्स, ठीक है। एम वाज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म to include more Indians in the administration, but not to end the British rule. Here, extremist aim was getting Swaraj, self-rule, wanted to end the rule of Britishers. तो ये aim सबको समझ आ गया? यहाँ तक point clear है? Now, belief, second basis of differentiation, belief. What did they believe in? किस चीज में ये believe करते थे? ठीक है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे that they believe in the efficacy of peaceful and constitutional agitation. I told you about 3 P's. मैंने आपको क्या बताया था? 3 P's के बारे में बताया था. Protest, peaceful protest, petition and patience. कि भाई ब्रिटिशर्स के ऊपर थोड़ा विश्वास रखो. ये मॉडरेट्स बोला करते थे, ब्रिटिशर्स पे थोड़ा सा विश्वास रखो. तुम प्यार से बात करोगे तो वो प्यार से जवाब देंगे. प्रोटेस्ट करो बट पीसफुली करो, सड़कों पे धरना दो या स्पीच दो, इतना करने की जरूरत है. मारधाड़ करने की क्या जरूरत है? और पिटीशन साइन करके भेज दो, चाहे वो 1 साल में सुने 10 साल में सुने, तुमने तो पिटीशन भेज दी अपनी तरफ से, राइट? तो ये 3 पी थे जो मॉडरेट्स फॉलो करते थे. दैट इज व्हाई द मॉडरेट पीरियड कुड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कुछ 5-10 साल ही चला था, ठीक है. तो प्रोटेस्ट करते थे, पिटीशन भेजते थे और पेशेंटली बैठे रहते थे. ये इनका बिलीफ सिस्टम था. They said that constitutional agitation, going by the books, is required because they did not want to end the British rule. They just wanted more representation. जो चाहते थे ब्रिटिश रूल खत्म हो, वो सड़कों पे उतरकर डंडे लेकर उतरते थे कि भैया अब ये बातों से नहीं मानेंगे तो लातों से इनको बताएंगे. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? So here they had great faith. Write it down. They had great faith. They had great faith in the British sense of justice. तो वो अपने ब्रिटिशर्स की जो जस्टिस प्रणाली थी उस पर काफी फेथ था इनका. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू आवर एक्सट्रीमिस्ट. अब अपने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की बात कर लेते हैं. ठीक है. व्हाट डिड दे वांट, व्हाट वाज देयर बिलीफ सिस्टम? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो दैट द एक्सट्रीमिस्ट, और यू कैन से दे वर ideological inspiration for us. पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशनल पीपल थे हमारे लिए. ठीक है. सो हियर यू कैन से दैट they believed in Indian history, heritage, culture and education system. They revived the Ganpati and Shivaji festivals to arouse the masses for Swaraj. ठीक है. तो basically the extremist, they had firm belief in their own roots. They said, we don't require British justice system. We don't require British education system. We don't require the British, strategy of ruling a nation. We believe in our own Chhatrapati Shivaji Maharaj. We believe in our own rulers, our own Indian leaders, right? हम अपने शिवाजी महाराज पर बिलीव रखते हैं. उनकी नेवी सिस्टम, the army system, the administrative system, the cultural, you can say, strength of India lies in these festivals like Ganpati festival, Shivaji festivals. They knew, extremists knew the spiritual strength of India, which the Britishers had been ruining since the time they entered India. हमारे spirit, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था? What did I tell you in the first lecture? I told you when a nation is not spiritually strong, anybody can just break it, even if that particular nation has lots of money. अगर एक इंसान के पास, let's take an example of a man also. A man is very wealthy, very strong financially, physically,
but spiritually that man is not strong. तो उस केस में even after having so many money, n number of money, even after having successful business, even after having a very good family, he would feel that void in his heart, because that peace in a human being's life, it comes from spiritual strength only. I don't know if you have watched that movie Kantara. मुझे पता नहीं आपने वो मूवी देखी है या नहीं. In Kantara, in the opening scene, there was a king who was very rich, very rich. His empire, he had a very expanded empire. He had everything, children, wife, everything, a very strong army. He used to win all the battles. But still there was peace, that he was missing. Even after having everything materially, and if after being successful materially, he was not happy. So he went on, in the search of happiness. And then he comes across that, deity. And he asked the villagers for that deity, because उस deity से मिलने के बाद, उस देवता से मिलने के बाद उनको एक शांति का अनुभव हुआ. He experienced peace for the first time after meeting that deity. Right? So that indicates that even if you have all the material richness and success, if you are not spiritually strong, then the peace would be, you would be aloof from the peace. वो peace आपके heart में नहीं होगा. ठीक है? तो the extremist knew this. तो इसीलिए moderates were happy only in the for the material success, wanted representation in the administration, this and that. But the extremists said, we just want self-rule, we want to strengthen our spiritual strength, and we want to go back to our roots, our culture. ठीक है? तो इसीलिए they were reviving the different festivals, the cultural, you can say, education. They were culturally educating people, socially educating people about their history, so that the masses would also stand against the Britishers and ask for Swaraj. यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? तो जल्दी से बता दो. एम और बिलीफ क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? होप यू ऑल हैव रिवाइज्ड. आप लोगों ने ब्रेक टाइम में अच्छे से पानी वानी सब पी लिया है, उम्मीद कर रही हूँ. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस वाज आइडियोलॉजिकल डिफरेंस. ठीक है, नेक्स्ट हमारा डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आज की लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ बेसिकली यू कैन राइट दैट ए पॉइंट इनका ये है that the moderates, they were inspired by the ideas of Western philosophers, like Milberg, Spencer, etc. तो जितने भी वेस्टर्न फिलोसफर्स थे वो काफी इनको इंस्पायर किया करते थे. फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट्स लाइक लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, इक्विटी. सो यू कैन राइट that they imbibed the concepts of liberalism, democracy, equity, and freedom, but only the concepts, not the practical application. ये लोग सिर्फ concept building में believe रख रहे थे, application में नहीं. Because there is one point that you need to remember. You study lot of concepts daily. ठीक है, आप daily बहुत सारे concepts पढ़ते हो ना UPSC में. But once you become an IAS officer and you forget about all those concepts, you are not applying them practically, right? तो इससे क्या होगा? What will happen? Obviously, the studying of all those concepts, that would go waste. ठीक है, जो concepts आपने पढ़े वो सब waste ही हो गए ना एक तरीके से. Because there is a difference between reading and practically, applying them. When you read something, that is good, but unless and unless you are practically using them, that is all waste. For example, you are reading, you are studying. Giving mock test is important, solving PYQ is important, but in reality, you are not solving even one question, right? That would not help you in clearing prelims exam. इसीलिए कहते हैं ना कि सिर्फ बोलो मत कि मॉक टेस्ट देना अच्छा है, दो भी. ठीक है, सिर्फ बोल दिया कि मॉक टेस्ट देंगे देंगे देंगे, एग्जाम आ गया, एक मॉक टेस्ट नहीं दिया तो प्रॉब्लम होगी ना. इसीलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो टू टेस्ट दैट कॉन्सेप्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? कमिंग ऑन टू द सेम आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट. ठीक है, अब एक्सट्रीमिस्ट को पढ़ लेते हैं. तो राइट इट डाउन ओवर हियर. यहाँ पर पहला पॉइंट जो हम लिखने वाले हैं, आई जस्ट क्रिएट दिस बॉक्स ओवर हियर. A point, they wanted to inculcate pride in India's
glorious culture to generate the spirit of nationalism. B point. They invoked goddesses Kali or Durga for strength to fight for the motherland. So here, what the extremists are doing? Extremists क्या कर रहे हैं? They are trying to instigate the feeling of the spirit of nationalism in the heart of the Indians, right? Because when you are internally motivated, when you have that fire in you, only then you can fight for anything. सिर्फ बोल के थियोरेटिकल तुमको समझाकर मैं नहीं मोटिवेट कर सकती हूँ, जब तक मैं आपके अंदर इंडियंस के प्रति नेशनलिस्ट भावना ना लेकर आऊं, right? Even when you are preparing for UPSC, start your preparation keeping in mind the security that you will give from this particular job, or the perks that you will receive from this particular job. Initially that will motivate you, but only for few months. Till the very end of this exam, what will motivate you is, what will help you keep studying every day is that you have to go on the field and solve the plight of the fellow Indians. एंड तक इस पढ़ाई में आपको एक ही चीज मोटिवेट कर सकती है और मोटिवेटेड रख सकती है इंटरनली, कि भाई दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, इंडिया में विमेन के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ कितनी सारी एट्रोसिटीज हो रही हैं, और अगर आपके तरफ से कुछ हो सकता है जिससे वो एट्रोसिटीज कम हो जाए, तो क्यों ना आप पढ़ो, राइट? वो मोटिवेशन ही तो होता है ना, कि भाई मुझे पता है मैं किस स्ट्रगल से निकला हूं, तो मैं नहीं चाहता कोई और इस स्ट्रगल से गुजरे, तो आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर, ताकि सामने वाले को वो चीज फेस ना करनी पड़े। यही मोटिवेट करता है आपको एंड तक। गाड़ी बंगला घर एंड तक तो मोटिवेट नहीं करता, बिकॉज वो तो आप किसी और प्रोफेशन में जाके भी कमा सकते हो। what is see, there are so many educators I know, they are earning more than a particular IAS officer. I know those educators personally जो हफ्ते का 5 लाख कमा रहे हैं, एक हफ्ते का, ठीक है? मैं ऐसे एजुकेटर्स को जानती हूँ जो 1 घंटे का 6 लाख लेते हैं। मैं ऐसे एजुकेटर्स को जानती हूँ जो महीने का 10 से 15 लाख कमा लेते हैं। और मैं ऐसे बिजनेस पीपल को भी जानती हूँ, ऐसे बिजनेस पर्संस को भी जानती हूँ जो महीने का 40 लाख बना रहे हैं, ठीक है? तो मैं आपको बता रही हूँ, पैसा एक हद तक मोटिवेट करता है। इट इज ओनली द स्पिरिट टुवर्ड्स द अदर ह्यूमन, द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी दैट विल मोटिवेट यू टू डू एनीथिंग इन लाइफ, एनीथिंग बिग इन लाइफ, ठीक है? So these extremists used to invoke goddesses. Basically they were attracting people closer to their culture, जो ब्रिटिशर्स ने बुला दिया था। ब्रिटिशर्स were very, they were trying since the day they came, they were trying to erase the culture, the belief in goddesses, right? They were trying to rub it off. And today, in today's time, I see so many YouTube videos of those people who are from London, right? Or who are from England, they talk about goddess Kali. मैंने कितने ऐसे वीडियोस देखे हैं। वो लोग जो लंदन से हैं, जो इंग्लैंड से हैं, वो गॉडेस काली के ऊपर स्पिरिचुअल वीडियोस बना रहे हैं, एक्सप्लेनिंग द पावर एंड द ग्लोरी एंड द ब्यूटी ऑफ गॉडेस काली। उस टाइम पर दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ आवर इंडियन गॉडेसेस। समझ आ रही है बात? नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस वाज द अप्रोच ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। आई होप अब आपको समझ आ रहा है कि आइडियोलॉजिकली अगर आप सही रास्ते पर हो तो यू कैन अचीव बिग थिंग्स, राइट? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर, इसी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द सी पॉइंट यू विल राइट, that they were guided by 4 principles. ठीक है? They were guided by 4 principles. First principle was Swarajya, self rule. Second principle was Swadeshi, ठीक है? One's to belonging to one's own nation. Third was boycott of foreign goods, and fourth was national education to make Indians aware. ठीक है? यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन इफ द पॉइंट इज क्लियर. They were guided by 4 principles: Swarajya, self-rule; Swadeshi, belonging to one's own nation; boycott of foreign goods; and spreading national education, Indian way of education, so that more Indians can be made aware of their own nation, of their own culture and heritage. आई होप यहां तक पॉइंट्स आपके क्लियर है, ठीक है? तो ये आइडियोलॉजी पढ़ लिया। वी हैव स्टडीड एम, बिलीफ एंड आइडियोलॉजी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां पर आप एक बेसिस पे लिख लो, इन द बेसिस कॉलम राइट इट डाउन, मेथडोलॉजी।
over here, write it down. Methodology. ठीक है, what kind of methods were they using? अब किस तरीके का मेथड ये लोग यूज कर रहे थे? Let's write that down. ठीक है, so when we talk about the moderates, first point, they follow the principles of 3P: petition, prayer, protest. ठीक है, these were 3Ps. And second point यहां पर आ जाएगा, they believed in cooperation and reconciliation. They believed in cooperation and reconciliation. तो ये 3 P's हो गए, petition, prayer, protest, and they were believing in cooperation and reconciliation that we have studied. Now coming towards the extremist. So here they believe in the militant methods. So basically they were not very keen towards patience, right, or peaceful means of protest. They were militants. ठीक है, ये लोग अपने हाथों का यूज कर रहे थे. Second important point, they followed the principle of Atma Shakti, that is the power of the soul or self-reliance. ठीक है, to be dependent on yourself as a weapon against domination. As a weapon against domination. Third, method of non-cooperation. And fourth, advocated democracy, constitutionalism, and progress. ठीक है, यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गए. मिलिटेंट मेथड थे एक्सट्रीमिस्ट के. आत्मशक्ति का प्रिंसिपल, दैट मीन्स डोंट बी डिपेंडेंट ऑन द फॉरेनर्स और any other personality for help. Be dependent on your own self, right? Atmashakti, again spirituality they are following, dependent on your own soul, and you can inculcate these features in your preparation journey also. Don't be dependent on anyone, not even me. मुझ पे भी dependent होने की जरूरत नहीं है कि मैम के notes, मैम की videos will be dependent on that. Learn how ma'am is making notes, how Arpita is explaining things, so she must have understood those things herself. मैं आपको एक्सप्लेन कर पाती हूँ, क्यों? इसलिए नहीं कि कोई और आके मुझे एक्सप्लेन कर रहा है फिर वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ, नहीं. 2 hours when I'm speaking, when I'm explaining, it's not कि somebody, I have worn any earphones that somebody else is speaking in my ears and then I'm explaining that back to you. ऐसा नहीं मेरे कानों में आके कोई कुछ बोल रहा है और मैं आपको बता रही हूँ. I studied it myself, I was dependent on myself, and then I analyzed it all by myself. Then I understood it, learned it, and now I am explaining that back to you. जो मैंने समझा वही मैं आपको समझा रही हूँ अपने पर्सपेक्टिव से, है ना? And when I tried to make flowchart initially, जब मैं I'm been making flowcharts since I was in class 10th class से. Why and how did I learn? When I used to study any subject, theoretical subject, I used to love theory, right? But I did not know how to cram. मुझे थ्योरी पढ़ना तो पसंद था, मुझे रटना नहीं आता था. Still today I don't know how to cram. That is the only reason I have stepped out of many other you can say professional opportunities जहाँ पर रटना बहुत ज्यादा पड़ता था. मैं उनसे बाहर निकल जाती थी क्योंकि मुझसे रटा नहीं जाता. I just leaving aside my own phone number, I don't remember even my mother's phone number. अपनी मॉम का फोन नंबर भी याद नहीं है, मैं इतनी बुलक्कड़ हूँ, ठीक है. But in standard 10th SST, there was a subject of SST, history वगैरह सब होता था, social sciences. Then there was a subject Hindi, English, right? All these subjects I used to find them very boring. So I tried to make myself forcefully interested in them by different ways. For example, initially when I studied history, I studied about French and the war that happened in France. So, and American Revolution. So when I was learning, I was not able to learn them, retain them. So what I did, I took a pen and paper. And when I was reading, I was just drawing. This was the French, these were the Americans. इस तरीके से ना मैं छोटे-छोटे drawings and छोटे-छोटे cartoons बना रही थी. And then when I studied that entire paragraph, I looked at my cartoons that I made. छोटा-छोटा dialogues मैंने लिख दिए थे. I used to even do like this.
कि दिस वाज अ फ्रेंच जर्नल, ही सेड दिस टू अ फ्रेंच नेटिव। ठीक है, इस तरीके से मैं कार्टून बनाया करती थी। तो when I closed my book and I looked at my paper, I saw कि it was very easy to revise and to retain what I had just read in that particular paragraph through these pictures and through these boxes. Then I started refining them. हर बार जब भी मैं पढ़ती थी पैराग्राफ, हर बार मैं और रिफाइंड वे में चीजों को समझ के लिखा करती थी साइमल्टेनियसली। एंड माय फादर यूज्ड टू लाफ एट मी, ही नेवर टुक मी सीरियसली। ठीक है, उन्होंने कभी सीरियसली लिया, ही यूज्ड टू से कि शी इज जस्ट पासिंग अवे अ टाइम ड्राइंग बनाने के चक्कर में। बट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड आई वाज नॉट मेकिंग ड्राइंग्स, आई वाज ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ retain the things that I was reading. My father was a chartered accountant and he was an excellent, you can say, crammer. रट्टाबाजी उनके टिप्स पे रहते थे उनको। he had around 300 to 400 clients, right, when he died। उस टाइम तक उनके 300-400 clients थे, ठीक है, in his CA practice। and he remembered almost all the contact numbers of all these clients, even the email IDs भी याद थी उनको। and when he was in the hospital, he was aware, he used to tell me कि audit की date आ रही है, these are the phone numbers, call on these numbers and tell them to submit these documents। and I was shocked, around 100 लोगों की email IDs और numbers उनके tips पे थे, ठीक है, even when he was losing his consciousness। so he was an excellent crammer। and when I used to, and I am just a dabba goal in cramming, तो used to say she is not my daughter, ठीक है, वो इस तरीके से मजाक करते थे। तो when he used to look at these drawings that I used to make ना for helping myself to retain things, he used to laugh at me। but these things now have become my strength। अब मेरे पढ़ाने में यही चीज काम आ रही है। I was in 10th 11th, उस टाइम पर सब हंसते थे मुझ पर कि क्या करती रहती है, कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, रट्टा जाता नहीं है, कुछ लर्न नहीं होता। बट यही चीज आज मुझे लर्न भी हो रही है, मैं आपको समझा भी पा रही हूँ और आपको भी हेल्प कर रही हूँ फ्लो चार्ट माइंड मैप बनाने में। और फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप भी एक की है चीजों को याद दिमाग में हमेशा के लिए रखने के लिए, ठीक है। सो ऑलवेज फर्स्ट थिंग फ्रॉम दिस स्टोरी रिमेंबर दैट फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकेंड थिंग, व्हाट इज योर वीकनेस टुडे might become your strength after few years, just trust the process, ठीक है। Third thing that you have to remember, today people will laugh at you, they will say she is good for nothing, he is good for nothing, just spending his time or her time in bekar ki useless things। but after few years those very people would feel proud of you, ठीक है। those very people will try to follow you or follow your steps, will try to motivate others through your examples। ये चीजें हमेशा याद रखना। एंड फोर्थ थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज बिलीव इन योर सेल्फ, प्रिंसिपल ऑफ आत्मशक्ति। अपने ऊपर भरोसा करो, पेरेंट्स या भाई बहन भरोसा करे ना करें, फ्रेंड्स भरोसा करे ना करे, पार्टनर करे ना करे, फर्क नहीं पड़ता। तुम उनके लिए पैदा ही नहीं हुए थे, तुम अकेले ही आए थे, तुम्हारे साथ कोई नहीं आया था, तुम अकेले जाओगे। व्हेन आई सॉ माय फादर लीव अस, आई एम स्टिल हियर। आई लव्ड माय फादर बट आई डिड नॉट गो विद हिम, आई एम स्टिल हियर, राइट। तो तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। अपने ऊपर जितना डिपेंडेंट हो सके हो जाओ आज, ठीक है, क्योंकि अगर किसी ने साथ छोड़ा तो हिल जाओगे अगर अपने ऊपर नहीं डिपेंडेंट हो। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर दीज 4 प्रिंसिपल्स इन योर लाइफ, ठीक है। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आई होप ये एक्स्ट्रा ज्ञान आपको बोर नहीं किया होगा, ठीक है, उम्मीद करती हूँ बोर नहीं हुए। चलो, द नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस, ये छोटा छोटा ज्ञान की बात है ना, आई वुड शेयर विद यू बिकॉज आई हैव माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस, सो इट फील्स वेरी गुड व्हेन आई शेयर दीज थिंग्स विद यू। जस्ट वांट टू मेक श्योर कि कोई और उस चीजों से ना गुजरे जिन चीजों से हम गुजरे हैं, ठीक है। So now we are going to understand the differentiation on the basis of leaders. So we know here A.O. Hume was the founder. Then we have Bhomesh Chandra Banerjee, ठीक है। Then we have Surendra Nath Banerjee. Then we have Dada Bhai Nauroji. Then we have Feroz Shah Mehta. We have here Gopal Krishna Gokhale, the political guru of Mahatma Gandhi ji. We have Justice Ranade. We have Badruddin तैयब जी, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर हिंदू के फाउंडर आ जाते हैं, हिंदू न्यूज़पेपर जो अभी हमारी बाइबल है करंट अफेयर्स की, सुब्रमण्या अय्यर जी, ठीक है। तो एंड देन वी हैव आल्सो द फेमस पंडित मदन मोहन मालवीय,
ठीक है, तो दीज आर फेमस लीडर्स ऑफ द मॉडरेट्स, ये मॉडरेट्स के फेमस लीडर्स हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू द एक्सट्रीमिस्ट वी हैव लाल, बाल, पाल. ठीक है, दीज आर दी ट्रायो. सो लाल, बाल, पाल कौन कौन है? जब हम बात करते हैं लाल की, लाल इज लाला लाजपत राय जी. देन वी हैव बाल, बाल इज बाल गंगाधर तिलक. And then we have Pal. Pal is Bipin Chandra Pal. These were the famous trios of extremists. Then we have Aurobindo. उसके बाद हमारे आ जाते हैं यहाँ पर राज नारायण बोस. Then we have Ashwini Kumar Dutt. These are famous extremist leaders. ठीक है, यहाँ तक I guess points are clear. Now we'll study the social support. From where they were getting their social support. इनको इनका social support कहाँ से मिल रहा था? So for the moderates, they were getting social support from zamindars. I told you they were middle class educated people. They were getting social support from the upper middle classes. ठीक है, in towns. That is why they were moderates, because they were not spending their physical strength. They were just spending their mental strength. Here in extremist, the educated, middle and even the lower classes were supporting the extremist. Okay. अब बात यहां तक मुझे बता दो अगर पॉइंट्स क्लियर हैं. इन द चैट सेक्शन लेट मी नो इफ द पॉइंट्स आर क्लियर एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. चैट सेक्शन में फटाफट से बता दीजिए अगर यहां तक पॉइंट क्लियर है. जस्ट राइट वाई. यस मीन्स वाई, एन मीन्स नो. वाई या एन लिखकर मुझे बता दीजिए यहां तक अगर पॉइंट क्लियर है. Okay, Sai is saying yes. Vatsalya is saying yes. Rishabh is saying yes. Points clear. Amritansh, Raju, points are clear. Recording. Next important differentiation point is contribution. What did they contribute? ठीक है, इन्होंने क्या contribute किया ये पढ़ने वाले हैं हम through contribution. When we talk about contribution in moderates के बारे में अगर हम देखेंगे, we know that Dadabhai Naoroji wrote that paper, right? Drain of Wealth Theory. So here first contribution was the economic critique of British imperialism. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि they started pointing out how Britishers were draining our wealth. So they were also ready and keen to point that out to the Britishers. उनको पता था ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, पैसा लूट लूट के जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को ड्रेन आउट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया. Second was constitutionalism reforms. I told you Dadabhai Naoroji, he was against the recruitment of Indian civil services, right? So he was trying to bring constitutional reforms, ठीक है, in the legislature. Third was campaign for general administrative reforms. So he was creating societies, East India Association, London Society, London Indian Society, right? So he was trying to, make Britishers include more and more Indians in the governance. So general administrative reforms bhi la rahe the. Plus, they also fought for the defense of civil rights, but everything was happening on paper, because civil rights means देखो salt tax के खिलाफ Bhumesh Chandra Banerjee was the first one to oppose and protest. So they were also protecting the civil rights of the people. What about the extremist? Extremist के बारे में क्या कहना? ठीक है, what they were doing, what they were contributing? They contributed a lot. For example, first they demanded Swaraj. ठीक है, this was the first very important contribution of the extremist. The spread of national education, not the British style of education, the Indian style of education. Third, upliftment of downtrodden. They were talking about India's upliftment, not the upliftment of only the middle class people. They brought the feeling of nationalism in the heart of Indians, and they supported the revolutionary movements. And again, another important point, they set up charitable
Association for Rural Sanitation. For rural sanitation. 7th, protecting the national heritage and culture of India. तो ये इनका एक तरीके से कंट्रीब्यूशन था. These were the contributions of the extremist. यहां तक आई गेस द पॉइंट्स आर क्लियर. उम्मीद करती हूँ यहां तक आपके पॉइंट्स एकदम क्लियर हैं. If the points are clear, please let me know in the chat section. Chat section में बता दीजिए if the points are clear. If you have noted this down, let me know in the chat section. तो हमने 7 basis of differentiation यहाँ पर पढ़े हैं. ठीक है, यहाँ तक I guess points are clear and you have made this flowchart, this differentiation table also. Now we are going to start with the revolutionary movement. अब हम start करने वाले हैं revolutionary movement के बारे में. ठीक है, the revolutionary movement in India. Very important point in the modern Indian history because इसी के ऊपर you can also write it down. 85% questions in prelims they are coming from this topic only. 85% questions जो हैं prelims में वो इसी topic से आ रहे हैं. Revolutionary movement, the leaders involved, the year of the movement, chronological order of the movements, and in mains 2 questions can be asked 10 marks के 10 marks each. That means 20 marks in mains from this particular topic. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. 20 मार्क्स हंसी खेल नहीं है. अगर ये टॉपिक अच्छे से कर लिया 20 नंबर तुम्हारे हैं. if you complete this topic very with dedication and focus, then 20 marks are yours and even 1 mark can make a lot of difference in your final result. एक एक नंबर से काफी डिफरेंस बड़ा बन सकता है. So when we talk about the revolutionary movement or the revolutionary ideology, it comes up during the, write it down, late 19th and early 20th century and early 20th century. And it was a result of several internal and external influences. These influences were working on the minds of the youth, because in the revolutionary movement the youth was involved, not the elderly people. The youth was involved. When we talk about the early phase of revolutionary movement, it started in Bengal, it was in Maharashtra, it was in Punjab, UP, Odisha, Bihar, and Madras provinces. These were the provinces where the early phase of the movement could be seen. ठीक है, यहां तक पॉइंट अगर क्लियर हो गए हैं तो फटाफट से मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए कि मैम till this aspect the point is clear, absolutely clear. All right, यहाँ तक क्लियर हो गया पॉइंट सभी को, एंड आई होप यू हैव रिटन दिस डाउन ऑल्सो. ठीक है, बिकॉज दीज रीजन्स वर पॉलिटिकली एक्टिव. ये जो रीजन्स थे ना आपके, ये पॉलिटिकली एक्टिव रीजन्स थे. तो द यूथ वर वेरी फायर्ड अप इन दीज रीजन्स. इस रीजन में ना यूथ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. सो इन मेंस व्हाट दे कैन आस्क, मेंस में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? राइट डाउन. द क्वेश्चन कैन बी the revolutionary movement was the movement involving the youth of India. List down
the reasons behind the rise of revolutionary terrorism. क्वेश्चन आ सकता है 15 मार्क्स का, दैट मीन्स 250 वर्ड्स. ठीक है, दिस कैन बी द क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क यू. इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है. आई होप यू हैव रिटन डाउन द क्वेश्चन. उम्मीद करती हूँ आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है. If you have written down the question, let me know in the chat section, then we'll change the slide. हम slide को change कर देंगे. ठीक है, chat section में मुझे प्लीज बता दीजिएगा अगर आपने ये question लिख लिया है. All right, so you have noted down this question. We are waiting for 1 more minute for everyone to note down the question. All right, सबने note down कर लिया? Coming on to the next important point. Let's solve the question. So here we are going to study the reasons behind the rise of revolutionary terrorism. ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं reasons behind the rise of revolutionary terrorism. This is going to be really important and interesting as well. तो शुरू करते हैं. The first important reason, पहला reason क्या होगा यहाँ पर? First important reason would be nationalism, the feeling of nationalism among youth. The feeling of nationalism among youth is the first reason of revolutionary terrorism. This is the most vital factor which contributed to, you can say, increase the spirit of nationalism. ठीक है? The first very important factor why nationalism started rising up in youth was the economic exploitation. The economic exploitation of Indians by the British government. ठीक है? And second was the partition of Bengal. Second was the partition of Bengal. These were the two most important factors why feeling of nationalism started rising amongst the youth. ये दो factors थे क्यों कि nationalism की feeling youth के अंदर आने लगी थी. Now the youth is more, you can say, active, right? हमेशा याद रखना यूपीएससी की एज यहाँ पर आप देखोगे in your prime years 21 to 30 you prepare for UPSC because this is the year when you are most active. This is the youth years of a person, right? 30 के बाद responsibilities और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं. But the prime year where you can hustle day and night, you can do a job, you can study, you can do job and business, you can study and do business in this particular prime age because these are the hustle age. This is known as the hustle age, youth, fiery age. So similarly here, the youth, they knew about the economic exploitation of Indians, which was being done by the Britishers, and the partition of Bengal was also a horrible kind of thing that happened in India for the first time. So that increased the feeling of nationalism amongst the youth. Okay. Second important factor. What was the second important reason why the revolutionary terrorism started? You can write the failure of moderates. The failure of moderates and Congress initially, and extremist Congress you can write. Okay, and extremist Congress. Moderates and extremists, both of them, their motives were good, but they could not succeed at the level where Indians wanted to. Younger element was not ready to retreat after the decline of the Congress. राइट ये बॉयकॉट मूवमेंट, ये स्वदेशी, ये जो हुआ है, स्टार्ट हुआ है, इसकी ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है यूथ की पार्टिसिपेशन की वजह से. But though these movements also were not very successful, so the youth, they were all fired up. They wanted anyhow to now kick out the Britishers out, from our nation. Third important reason why this revolutionary movement started: leadership's failure. Leadership's failure to tap the revolutionary
energies of the youth. Now the leaders, the moderates were oldies, right? Moderates to aged the na, so they did not tap into the energies of the youth. They did not include more and more youth, into the movement. And extremists were trying to undo the failures of the moderates. So they also did not focus on the youth. मॉडरेट्स क्या कर रहे थे? वो लोग तो एजेड थे, तो वो लोग अपने पिटीशन, प्रेयर, प्रोटेस्ट के थ्रू काम कर रहे थे. एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स की गलतियों को छुपाने की या फिर मॉडरेट्स की गलतियों को सही करने की कोशिश कर रहे थे. किसी ने यूथ की एनर्जी को देखा ही नहीं, यूथ के पोटेंशियल को देखा ही नहीं, राइट? एंड देन कम्स द फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन. फोर्थ रीजन यहाँ पर क्या आ जाता है? लेट अस अंडरस्टैंड ओवर हियर. नाउ कमिंग टू द फोर्थ रीजन, the government repression. It left no peaceful avenues open for the protest. So the government was so repressive. Even in the moderate phase, they were not, doing anything about the petitions of the moderates. Even in the extremist phase, they were not listening to the extremist, right? So that kind of repression and repulsion from the government side, it left no peaceful avenues. Now the youth was saying, now we have to do something physical. We have to adopt the violent method. जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से मानते ही नहीं है, वो लात खाकर ही मानते हैं, राइट? तो ये इस तरीके का, एक तरीके से आप बोल सकते हो, there was a kind of feeling which was generating. These were the 4 reasons. And there was a 5th reason which was really special and really important. ये 5th reason काफी special है. That is ideological appeal of ideas. Now I'll tell you what is it. You all have heard about Bhagat Singh, right? Sukhdev, Rajguru. They belong to the revolutionary phase only. So here, the youth was thinking that freedom can be achieved only through revolution. Okay? It can be achieved only through revolution, only through heroic actions, only through sacrifice, only by assassinating the British officials, by striking terror in the hearts of British rulers. Rulers means British rulers. And that is the major reason why the revolutionary movement started. अब यहाँ का जो यूथ था वो ये सोच रहा था, जब तक इनके दिल में दहशत नहीं डालेंगे तब तक ये यहाँ से जाने नहीं वाले. जब तक इनको वैसे नहीं डराएंगे जैसे इन्होंने हमें डरा कर रखा है, तब तक ये लोग नहीं जाने वाले. और इसके लिए हमें खुद को भी कुर्बान करना पड़ेगा. इतने ये लोग फायर्ड अप थे. तो they were thinking कि until and unless these Britishers are scared of us, they will not leave us. So we have to make them afraid of us. We have to instill that fear of Indians in their heart by assassinating their officials, by sacrificing their own selves for the freedom of nation. So this was the major reason why the revolutionary movement started. यहाँ तक point clear हो गया सभी को? तो please let me know. If the points are clear till this particular aspect, let me know. जल्दी से chat section में. All right, सबको clear है? सबने ये flow chart बना लिया? Everybody has made this flow chart, I hope. Okay. So this was आज की class. ये थी आपकी आज की class. Let me know if you enjoyed this class. फटाफट से मुझे बताएं, कोई किसी को डाउट है? सबने एंजॉय किया ये क्लास? We studied about Indian National Congress, why it was formed, some points for prelims. We studied about 2-3 important personalities, Kadambini Ganguly, Umesh Chandra Banerjee, Dadabhai Naoroji. Then we studied the difference between moderates and extremists. This is important for both prelims and mains. And then we studied about the revolutionary movement and we solved the question regarding mains कि what were the reasons behind the rise of revolutionary terrorism in India. तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं. नाउ राइट इट डाउन, जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए फटाफट से यहाँ पर, ठीक है? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास दैट वुड बी कंडक्टेड, कब कंडक्ट होने वाली है? ट्यूसडे को कंडक्ट होने वाली है नेक्स्ट क्लास, ठीक है? द नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन ट्यूसडे. इट वुड बी आवर सेकंड लास्ट क्लास
and Wednesday ko our course will be over. On Wednesday the last lecture will be conducted, course over होगा, ठीक है. Saturday and Sunday would be the test days. Saturday को mains related test, Sunday को prelims related test will be conducted from whatever we have studied so far. Okay, Saturday मतलब आज I will be posting some questions related to mains, 2 questions that I would be posting for mains. Sunday को I will be posting questions related to prelims, and on Monday the test results will be out. Monday को I will be pointing out the results, ठीक है. So now what we are going to study on Tuesday, we are going to study the different revolutionary movements and their leaders. Then we'll study 10 important personalities in modern Indian history and 5 important governor generals. ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं ट्यूसडे को. And on Wednesday we'll study, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं organizations, movements and protest in the Indian national movement plus coming of Gandhi till partition. ठीक है, I hope यहाँ तक points clear है. This is what we are going to study on Tuesday and Wednesday in our second last and the last class. And then on Thursday there will be a mega test on the Telegram group. Thursday को Telegram group पे एक mega test होने वाला है, ठीक है, which will include questions from mains and prelims. Mains के आपके 5 questions होंगे और prelims के आपके यहाँ पर वही 100 questions होंगे, ठीक है, from whatever we have studied in the entire batch. I hope यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है. उम्मीद करती हूँ यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है. All right. So on this note, we are wrapping up the session. I hope you all are excited for the test that we are going to conduct on Thursday. And tonight I'll be posting 2 questions for mains. Prelims के आपके यहाँ पर 50 questions कल आपको भेजे जाएंगे ग्रुप पर, ठीक है, वो आपको सॉल्व करने हैं. 40 to 50 questions will be posting. So I hope यहाँ तक सबको points clear है. So on this note we are wrapping up the session. जो भी आपके doubts हैं, you can send those doubts via mail to me. I will be replying to all your doubts, or even on Telegram, not just mails. Telegram pe you can post all your doubts and I'll be solving them. Okay.